Hey guys, welcome back to my channel. So in my last vlog, I shared few monsoon skincare tips, and in today's video, I'll be sharing few monsoon hair care tips because I believe that it is not only skin that gets affected in monsoon, but our hair equally gets damaged when it rains. So without any further ado, let's start with the video. If you love oiling your hair, then make sure you go for some light hair oil like olive oil during monsoon, because heavy hair oil like coconut oil will make your hair more greasy and sticky, and इसको साफ करने में आपको ज़्यादा शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, which will lead to hair fall and frizzy hair. Because of the humidity and moisture during monsoon season, there are a lot of chances of bacterial infection in our scalp and hair. So it is very important to keep our scalp and hair clean during monsoon season, and for that you need to shampoo your hair twice a week. Now while you're selecting your shampoo, make sure you go for some mild shampoo. Now conditioning your hair during monsoon season becomes very important because humidity की वजह से already हमारा जो hair है बहुत ही frizzy दिखने लगता है. So just to add the extra protective layer to our hair, it is very important to use some good conditioner or hair mask, whatever suits you. How can I forget to tell you to apply a good serum on your hair? अब आप बोलोगे कि कंडीशनर तो लगा ही रहे हैं, सीरम की क्या ज़रूरत है? तो अगर आपने नोटिस किया है, बारिश के मौसम में कॉम्ब करते टाइम हमारे बाल कुछ ज़्यादा ही उलझते हैं एंड दैट लीड्स टू स्प्लिट एंड्स. तो इन सारे इश्यूज़ को डील करने में सीरम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो इट्स अ वाइज डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ गुड सीरम. मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ फॉर माई स्किन एंड हेयर ड्यूरिंग मानसून सीजन, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू वांट, यू कैन चेक दैट आउट. So it is very important to choose a right type of comb during monsoon season. So always go for white tooth comb, कुछ इस तरीके का. ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा. इससे जब आप अपने बाल में कॉम्ब करोगे तो इससे ना आपके बाल टूटेंगे ना उलझेंगे. अगर आपके बाल कुछ ज़्यादा ही फ्रिजी दिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है एंड यू कैन अप्लाई ऑल द नेचुरल थिंग्स ऑन योर हेयर. जैसे कि आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, दही लगा सकते हो. दीज थिंग्स विल नॉट ओनली क्योर द फ्रिजीनेस बट इट विल ऑल्सो एड एन एक्स्ट्रा शाइन टू योर हेयर. Due to excess moisture and humidity, dandruff is the one biggest issue during monsoon season. So if you want to treat dandruff, all you have to do is apply lemon juice mixed with little water. Massage this onto your scalp for like 1 or 2 minutes. Keep it for 15 to 20 minutes and then wash it off with a good shampoo. मैंने इस टॉपिक पे एक पूरा वीडियो कर रखा है जिसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे रही हूँ. If you want, you can check that out. Hair fall is the another biggest issue that we all face during monsoon season. So if you want to get rid of the hair fall, I have a DIY remedy for you guys. I seriously swear by this remedy. I mean, it has always worked for me every time I had a hair fall. I'll definitely do a separate video on this. And it is none other than hot towel treatment. So all you have to do is पानी को गर्म करिए, like it should be boiling water. Dip a towel in that. उसके बाद excess water को आप उस towel से निकाल दीजिए and cover your scalp with that towel. Keep it for like 2 to 3 minutes and repeat this process for like 3 to 4 times. And ये आपको ऑयलिंग के जस्ट बाद करना है once in a week. And एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, do not comb your hair immediately after doing this, because इसको करने के बाद आपके स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. उस टाइम जो आपका रूट होता है, हेयर रूट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक फॉर्म में होता है. तो अगर आप इमीडिएटली कॉम्ब करते हो आपको हेयर फॉल और भी ज़्यादा होगा. सो मेक श्योर यू डू नॉट कॉम्ब योर हेयर इमीडिएटली आफ्टर डूइंग हॉट टॉवल ट्रीटमेंट. आप ये खुद करके देखिए एंड यू विल नोटिस द रिजल्ट इन जस्ट 2 weeks. अगर आप कभी बारिश में भीग जाते हो, डू नॉट लेट द रेन वाटर टू स्टे इन योर हेयर फॉर द लॉन्गर टाइम बिकॉज दिस इज गोइंग टू डैमेज योर हेयर. जैसे ही घर पहुंचते हो आप इमीडिएटली वॉश ऑफ योर हेयर. मानसून सीजन में जब भी आप हेयर वॉश करते हो वो ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है. तो अगर आप ऐसे में अपने बाल बांध लेते हो, इससे और भी ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो ट्राई ड्राइंग योर हेयर completely before tying your hair. So these were my monsoon hair care tips for you guys. I hope you guys will find it useful. अगर वीडियो पसंद आया हो तो like, share and subscribe to my channel. We'll see you in my next. Until then, bye.